Unit of heat energy, SI unit, joule. Caloric heat is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water 45 degree to 15.5 degree centigrade. Another unit is 1 kilocalorie. One joule equal to 1 calorie equal to 4.1 joule. ये another unit is 1 kilocalorie equal to 1000 calorie. 1 kilocalorie equal to 4.18 kilojoule. Heat transfer. पहला फर्स्ट मेथड है कंडक्शन. In this process of the conduction, heat transfer takes place from one molecule of substance to the another molecule without any movement of these molecules. Heating of one end of the metal rod, the other end of material get hot quickly. This is only method by which heat transfer takes place in solid. Solid की only one method है conduction. Convection. On heating the liquid in a flask, the liquid near the base warm up quickly and becomes lighter, and the rise up it takes place by the heavier colder liquid. This process continues till the temperature of whole liquid is same. This way, convection current are produced. Heat transfer in gases and liquid takes place in the same way. In this method, heat is transferred in gases also. Radiation. Like light energy, transfer of heat energy can also take place in the vacuum throughout radiation. Heat travels in a straight line just light. When the heat energy reduces, object through radiation, then some amount of heat absorbed by object is called a good absorber. A good absorber of heat is also a good emitter of heat. Effect of heat. Increase in temperature. पहला फर्स्ट है increase in temperature. On heating of the object, it absorbs heat and its temperature increase. On cooling down the object, release heat and its temperature falls equally. Rise temperature. Different substance of same mass, we need different amount of heat. The quantity of heat absorbed and emitted by the object depend upon following: mass of substance Q proportional to m, on change on temperature Q is depend on delta T, on the nature of material, hence Q is proportional to m delta T. Q equal to m into S into delta T. ये एस इसमें क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है. एस आई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक जूल किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड. Specific heat capacity of the n substance is
amount of heat required to rise the temperature 1 unit substance by the 1 degree. एक किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक उसकी 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसकी स्पेसिफिक कहलाती है. स्पेसिफिक ऑफ वाटर इज हाईएस्ट 4189 जूल पर किलो per kg per degree centigrade. Substance with low specific required less time of heat up and cool down. Substance with low specific require the less time to specificate and the cool down. The heat absorbed given out during the state change does not cause increase in temperature. What is latent heat? Change in physical state used to heat is known as latent heat. Latent heat of fusion. On providing heat, the unit mass of substance get converted from solid state to the liquid state. The amount of heat during this process is called latent heat of fusion. See in the graph, as we provide temperature, heat, temperature rise up to change from solid to melting state. No temperature increase and energy is provided. Energy is used to solid to liquid. This period is called in this period when heat is used to change in state is known as latent heat. Here the latent heat of the fusion, or this is the latent heat of vaporization. This time when change in state, no temperature is rise on heating. This is latent heat of the vaporization. This is latent heat of fusion. In this state, solid convert to liquid. In this state, liquid convert to gas. Latent heat of the vaporization. Amount of heat required to convert until mass of water into vapor at the boiling point. Now there are 3 types of thermometer: Kelvin, Celsius and Fahrenheit. These 3 thermometers are generally used. Kelvin, boiling point of the water is 373. Freezing point of water is 273 in centigrade. Celsius, freezing point 0 degree, boiling point 100 degree centigrade. In Fahrenheit, freezing point 32 degree, boiling point 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. यहाँ
गैप कितना है ये 100 डिग्री, यहाँ भी 100 डिग्री, यहाँ फ़ारेनहाइट में 181 डिग्री, 180 डिग्री. We can change temperature in from the one to another. Fahrenheit change into Celsius or Kelvin, or Kelvin change into centigrade or Fahrenheit. Their formula is K. This is K. K minus 273 upon 100. सेल्सियस के लिए C upon 100. F minus 32 upon 100. इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं C upon 5 इक्वल टू F माइनस 32 upon 9, क्योंकि फ़ारेनहाइट 32 से चालू होता है, इसलिए ये सब माइनस करते हैं ये. आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री सेंटीग्रेड. कन्वर्ट -40 डिग्री टू सेल्सियस. देख लीजिए फ़ारेनहाइट में कितना है, -40. इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में. तो F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू C अपॉन 5. यहाँ देख लीजिए -32 है, -40 है, 40 नहीं है, -40. -40 माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू C अपॉन 5. C इक्वल टू कितना हो गया, -72 अपॉन 9 इंटू यहाँ देखो ये 5 है. ये -72 अपॉन 9 कितना हो गया, -8 इंटू 5 -40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह हमको एग्ज़ाम में सवाल दिए जाते हैं. किसी भी एक में डाटा देगा, जैसे 40 -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेंटीग्रेड में बदलिए, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए. जनरली सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट ज़्यादा पूछता है ये. थर्मल एक्सपेंशन यहाँ देख लीजिए. वाई टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक वायर टाइड लूजली, स्मॉल गैप बिटवीन द ईच concrete block, railway track. Generally and provide in heat, it sustains its volume increase and the obtaining volume decrease. Coefficient of the thermal expansion in a unit length of the object which occurs in the rising temperature 1 degree is called the coefficient of linear expansion. देखो लेंथ में जो बढ़ेगी उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इंक्रीज इन लेंथ इनटू इनिशियल लेंथ अपॉन इंक्रीज इन दी टेम्परेचर. इसको लीनियर इक्वेशन को अल्फा से शो करते हैं. ये क्या है, डेल्टा एल इंटू एल इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ देख लो, डेल्टा एल इक्वल टू लेंथ इक्वल टू अल्फा इंटू लेंथ इंटू डेल्टा टी टेम्परेचर. कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. सुपरफिशियल एक्सपेंशन मतलब इट्स वॉल्यूम
expansion in area of an object which occurs rising the temperature of the unit area by 1 degree is called coefficient of superficial expansion. इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या है, डेल्टा ए इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। यहाँ ये जो डेल्टा बी होना चाहिए इसको देख लीजिएगा, डेल्टा बी होना चाहिए तो इसको बीटा से प्रेज्यूम शो करते हैं। ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया इंटू अपॉन इनिशियल एरिया इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम, expansion in volume is substance which occurs in the increasing the temperature of unit volume 1 degree centigrade is called coefficient of volume expansion। यह देखिए दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको गामा से प्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3 गामा। आपने वीडियो देखा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अब हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है। वीडियो पसंद आया, धन्यवाद।